This requirement of DME, distance measuring equipment, can be fulfilled as per our requirements, civil aviation requirements. So to ensure safety, regularity and efficiency of international civil aviation operations, international standardization is essential in all matters affecting them, such as the operation of aircraft, aircraft airworthiness, and various other facilities and services which are giving support to the aerodromes, telecommunication, like navigational aids, air traffic services, etc. So the standards is a specification, the uniform application of which is necessary for the safety, regularity of international civil aviation navigation, while the recommended practices are agreed to be as desirable but not essential. So basically, the standards which uh, here they are provided, they are the specifications, and every OEM has to provide these the equipment as per this specification, so that safety and regularity of civil air navigation can it should not be compromised. And there are so many standards which they have given, which is to be followed 100%, and they have recommended some practices also which are agreed to be desirable. The essential standards which they have given, that is to be followed as per guidelines, but whatever recommendations are given, they are agreed to that they can be used, they can be, they are the desired standards but not the essential ones. The specifications for UHF DME as is specified in Annex 10, Volume 1, Chapter 3, Section 5. So we will start here. What we are covering today is distance measuring equipment has first, as a general specification of the whole system, we will study what is the system, what are its contents. So here we are telling DME system as a whole. Then we will segregate to our interrogator part, which is in the aircraft, and the transponder part, which is at the ground station. So the transponder part which we are having as a DME equipment with us, that is also having two parts. One is a transmitter, one is a receiver. Similarly, in aircraft also, there is an interrogator which is having a transmitter and a receiver. So we have to study 5 parts: the DME system as a whole, then the transponder part, its transmitter, then its receiver. Similarly, for the airborne equipment, interrogator, the transmitter of it, and the receiver part of it. So we are covering overall 5 parts here in this session. So the DME system shall provide for continuous and accurate indication in the cockpit of the slant range of an equipment aircraft from an equipped ground reference point. So uh, can anybody tell from where it should provide, which should be the reference point for So touchdown point, our runway. yes, very good. So the slant range should be provided from the touchdown point when it is co-located with ILS. But when it is co-located with DVR, some margin can be provided to it. The system shall comprise 2 basic components. One fitted in the aircraft, that I have just told, in the aerodrome airborne equipment, and the other installed on the ground.
The aircraft component shall be referred to as the interrogator and the ground component as the transponder. Okay, so aircraft component we are referring to as interrogator, and the ground component we are calling it as transponder. In operation, interrogators shall interrogate transponders, which shall in turn transmit to the interrogator the replies synchronized with the interrogations, thus providing means for accurate measurement of distance. Yesterday, Mr. Praveen sir has already informed how the DME equipment is working, the basic concept of it. When the airborne equipment, it interrogates the transponder at the ground, it validates those signals, interrogation signals, generates a reply, and sends them back. The airborne equipment again receives those transponder replies, processes it, and the distance is provided in the cockpit. This is how the operation of a DME is. When a DME is associated with a ILS, MLS, or VOR for the purpose of constituting a single facility, what they should provide? They shall be operated on a standard frequency pairing. Every now and then, a pilot has not to tune every ILS, then VOR, then DME. So, one standard has been made that whenever he is selecting a particular ILS or a VOR, the corresponding DME will be frequency paired. Second is be co-located within the limits prescribed for associated facilities and comply with the identification provisions. So whenever they are associated with VOR, if if it is standalone, then it is giving its own independent identification. Otherwise, when it is co-located with VOR, it is providing the identification of VOR, and when it is co-located with ILS, it is providing the last 3 digits of ILS identification. Associated VOR and DME facilities shall be co-located in accordance with the following. So, how this VOR and DME facilities, when associated, they should conform to for those facilities used in terminal areas for approach purposes or other procedures where the highest position fixing accuracy of the system capability is required. The separation of the VOR and DME antenna does not exceed 80 meters. So whenever DVOR and DME facilities are co-located, their antennas separation should not be more than 180 meters. As you have seen, presently, where is the DME antenna when it is co-located with our DVOR? Can anybody tell? सर कोई भी अभी हमारे जितने भी VORs लगे हैं और कोलोकेटेड DME है तो उसका एंटीना कहाँ लगा हुआ है? At counterpoint. Yes. So that is within the counterpoise range only. VOR के साथ जो भी DME कोलोकेटेड है उनके एंटीनास वहीं पे लगे हुए हैं. Not even 80 meters is very far. So for purposes other than those indicated in A, the separation of the VOR and DME antenna does not exceed 600 meters. Means जब वो co-located नहीं है, they are independent, then the separation of the VOR and DME antenna, it should not be more than जब वो टर्मिनल एरिया के लिए यूज नहीं हो रहा है फॉर अप्रोच पर्पस स्पेशली, then it can be maximum 600 meters far. Okay, this is what
the point B is telling that when your facility is not using the terminal areas for approach purpose, जब आप approach purpose के लिए use कर रहे हैं, terminal VOR की तरह use कर रहे हैं, तब आप 80 मीटर से दूर DME एंटीना नहीं लगाते हैं. इस पर्पस को छोड़कर अगर आप DVR DME कोलोकेटेड भी हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी DVR एंटीना और DME एंटीना के बीच में हो सकती है दैट इज नॉट मोर देन 600 मीटर्स. कोई बता सकता है ऐसा क्यों? अप्रोच पर्पस तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो लैंडिंग के पर्पस से यूज होना है, सो दे शुड बी नियर. और जब आप एन रूट में होते हैं, दूर होते हैं, तो जो ग्राउंड पे 600 मीटर्स का जो डिस्टेंस है, स्लांट डिस्टेंस जब आप देखेंगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली द सेम. आ रहा है सर समझ में? चलिए. पंकज जी फ्रॉम कंडला. हाँ ये सर. अच्छा, सेम इज द केस व्हेन इट इज co-located with NDB also. Exactly sir. Then I think for procedure it is required. Yes. Yes, when it is together with DME and NDB, then also eco आ रहा है सर किसी का? Okay. The same is the case when NDB is co-located. Right, sir. Right, sir. Right, sir. Thank you. Now DME system characteristics. So we are now studying the DME system as a whole. What should be its performance, range, coverage, accuracy? So the system shall provide a means of measurement of slant range distance from an aircraft to a selected transponder to the limit of coverage prescribed by the operational requirements for the selected transponder. So they are telling what should be the range of our DME system performance. So that is if it is co-located with DVR, then at least the coverage whatever is provided by VOR, that should be the extent practicable coverage for provided by DME antenna 2. When it is associated with either an ILS or MLS, then DME coverage shall be at least that of the ILS facility or the MLS azimuth angle facility. Okay, so when associated with VOR, DME and coverage shall be at least that of the VOR to the extent practicable, and when associated with an ILS, its coverage shall be at least that of the respective ILS azimuth angle guidance coverage sectors. What should be the accuracy of this DME system? It should be met on a 95% probability basis with the following standards specified. What are those standards? Those are that basically they have two parts, interrogator and a transponder. For interrogator, the interrogator shall not contribute more than plus or minus 315 meters or 0.25% of the indicated range, whichever is greater to the overall system error. So when interrogator part is concerned, it should not contribute more than plus minus 315 meters, that is plus minus 0.717 nautical miles. And for transponder, it shall not contribute more than plus or minus 1 microseconds. So here
1 microseconds corresponds to 150 meters. Can anybody tell how this calculation has arrived? Distance double by light in 1 microsecond. For how much? For 1 nautical mile, how much is the time taken? Sir, You must be knowing one 12 radar microsecond. range. 12 microsecond. 12 point Yes, 12. 12.36. Very good. 12.36 microseconds is the time to travel an EM wave for 1 nautical mile. So, to travel, if we are calculating for 1 microseconds, then 1 nautical mile divided by 12.36. That comes out to be around 149.88 something meters. That is showing you as 150 meters. Got it, sir? Sir, clear है? Got it, got it. Sir. Okay. So, this is the accuracy part that we have to conform to. Interrogator is an airborne equipment which is contributing this much of um, signal plus minus 315 meters, and the transponder which is at the ground, it should not contribute more than 150 meters to the overall system error. Recommendation is this, as you have already know, recommendations are desirable, they are not essential, but the recommendation they have given, the contribution to the total system error due to the combination of the transponder error, transponder location coordinate errors, propagation effect, pulse interference effect, they all include, if we are including all of the types of errors, it should not be greater than plus or minus 340 meters, that is 0.183 nautical miles for the plus 1.25% of distance measured. The combination of the transponder errors, transponder location coordinate errors, propagation effect, and random pulse interference effects shall not contribute more than plus or minus 185 meters to the overall system error when it is uh, associated with landing aid, means when it is associated with ILS. So a transponder associated with a landing aid shall not contribute more than plus minus 0.5 microseconds, that is 75 meters to the overall system error. So this is what we are discussing about, how what should be the performance, coverage and accuracy of our system. And here we are confining ourselves to DME-N accuracy, DME-N equipment only, which is narrowband. We are not going deep into DME-P as it is not being used in India. Now we are covering radio frequencies and polarization. The system shall operate with vertical polarization in the frequency band 960 megahertz to 1215 megahertz. The interrogation and reply frequencies shall be assigned with 1 megahertz spacing between the channels. So here the provision which we are providing is the channeling, in which the DME channels, whatever they are operating, they shall be formed in a paired configuration with VOR or ILS whenever it is being used. So channeling, as we all know, here I'll show from ICAO Annex 10 page of chapter 3. Here this is the way they have
DME, DVOR, DME ILS channeling and pairing. They have clearly shown these are the channels when starting from 962 is the 1x channel, and you will see 962 1x, 963 2x. This goes up to 1023. Okay, so 1x is 962, and when you will see 63x, here I'll show that will be going to page number 139. See, every channel is an increment of 1 megahertz frequency. Here 1011, 1012, 50x, 51x. So like this, up to 63x, it is going. (1024), and then 1025 is allotted to 64Y channel. After that, you will see 64Y will be 1025. So like this, they have paired with 1 megahertz frequency difference, and here the interrogation frequency will be 63 megahertz apart, and these are the frequency of VOR or ILS channels which are paired. So here I'll show you the example of 57x here in Shirdi. We are working on 57x channel. The VOR frequency is 112 megahertz. The corresponding interrogator frequency, interrogations are coming at 1081 megahertz with 12 microseconds spacing. The reply is generated at 1018 megahertz with a pulse pair spacing 12 microseconds. Okay, so here you can find up to, I think, 392 channels, up to 126 X and Y. Okay, so like this, channeling of um, frequencies has been done. Now moving to interrogation pulse repetition frequency. The interrogator average pulse repetition frequency shall not exceed 30 pairs of pulses per second, based on the assumption that at least 95% of the time is occupied for tracking. So here, if we calculate, I'll read the other line also. If it is desired to decrease the time of search, the PRF may be increased during search, but shall not exceed 150 pairs of pulses per second. So how much if we are um, suppose our DME is the traffic is too much. So if we are assuming 95% of the tracking time and 5% for the search time, um, can anybody just tell what shall be the PRF?
if 100 aircrafts are being accommodated, how much PRF will be required? So 2700. Hmm. 2700, sir. 2700 is the maximum PRF which we are having on our equipment. But ये just 3600. assumption है. अगर आप 95% को आप मानेंगे तो 95 aircrafts into 30 pulse pairs, that comes out to 2850, and 150 into 5 for 5 aircrafts. So the total comes out to 3600. But here we are having 2700 as the maximum PRF. So that desensitization will be applied, and the maximum what we can provide to the peak traffic of an area, that we can handle as the transponder's capability. So here this is telling you about interrogation pulse repetition frequency. If we are calculating like 95% into 30, 95 aircrafts into 30, and 150 into 5, so that comes out to be 3600. That is not for transponder side. This is speaking about interrogation pulse repetition frequency, airborne equipment. When after a time period of 30 seconds, if the tracking has not been established, the pulse pair repetition frequency shall not exceed 30 pulse pairs per second thereafter. If an interrogation is coming, if it is in a search mode, if it is um, finding distance from a particular DME station, if within a time period of 30 seconds it doesn't got tracked, if it is the establishment of tracking has not been established, after that time it will not search on 150 pulse pairs per second. It has to reduce its PRF to 30 pulse pairs per second only after 30 seconds. Now aircraft handling capacity and aircraft handling Sir, capacity of the system. The aircraft handling capacity of the transponders. Here this is telling you about transponder now. In an area shall be adequate for the peak traffic of the area or 100 aircraft, whichever is the lesser. So here it is telling that aircraft handling capacity of the transponder, it should adequately handle your peak traffic of the area or minimum 100 aircrafts, whichever is the lesser. So if you are having in a peak time 200 aircrafts in your vicinity, then it can't provide to service to all 200 aircrafts. It will provide to only 100 aircrafts. Recommendation is where the peak traffic in an area exceeds 100 aircraft, the transponder should be capable of handling that peak traffic. So if that transponder is having that capability, that it can provide service to more than 100 aircraft also. Moving to now transponder identification. All transponders shall transmit an identification signal in one of the following forms, which is as required. An independent identification consisting of coded international Morse code identification pulses, which can be used with all transponders. So if it is a standalone system or providing an independent identification, it can be used with those transponders. And when an associated signal which can be used for transponders is specifically associated with VHF navigation facility,
which itself transmits an identification signal. So when it is co-located or associated with VOR, then whatever VOR is having as ident, it will provide to the transponder, DME transponder, the same will be transmitted. And when associated with ILS facility, that is um, the last 3 digits of the ILS facility identification code. Now the characteristic of independent identification signal. The identity signal shall consist of the transmission of the beacon code in the form of dots and dashes. So the identity pulse कैसा होना चाहिए? That should be at least every 40 seconds में एक बार minimum जाना चाहिए at a rate of not less than 6 words per minute. जो डॉट का टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 0.1 seconds to 0.16 seconds, and for the time duration of dashes it is 3 times that of the duration of the dots, so 0.3 seconds to 0.48 seconds. uh, can anybody tell what can be the maximum time for uh, an identification to be transmitted? अगर हर डिजिट में तीनों डैशेस भेज रहे हैं, सर कोई कैलकुलेट कर सकता है? कोई भी एक ऐसा वर्ड हो जिसमें हर डिजिट पे लेटर पे 3 डैशेस जाने हैं, तो कितना मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए उस आइडेंटिफिकेशन को भेजने के लिए, आइडेंटिफिकेशन कोड को भेजने के लिए? सर कोई भी जस्ट ट्राई. सर है किसी के पास कोई कोशिश? सर आइडेंटिफिकेशन कोड में कितने डिजिट कितने लेटर्स भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं? एनीवन प्लीज? 4 in case of LPDME and 4 in case of LPDME and 3 in case of HPDME. करेक्ट. सो अभी आप अगर हमारा HPDME का केस ले लीजिए तो कितना टाइम लगेगा सर आइडेंटिफिकेशन कोड को भेजने के लिए? एक ऐसा कोड मान लेते हैं जिसमें हर डिजिट 3 डैशेस ले रहा है. 375 मिली सेकंड करीब सर. 375 मिली सेकंड करीब सर. 0.1 सेकेंड तो एक डॉट होता है, मिली सेकेंड में कहाँ आ गए आप? एक लेटर में अगर 3 डैशेस हैं तो 0.3 सेकेंड्स. ऐसे आप तीनों को ही 3 लेटर्स को ही 3 डैशेस से अगर बना रहे हैं तो 9 डैशेस. सो 0.3 into 3, then at least one dot in between a dash and a dot. So that 3.6 seconds. fine sir, very nice. So it will be around 3.6 you can say. अगर आप एक डॉट का टाइम पीरियड 0.316 पकड़ेंगे तो then for one dash it will be 0.48 seconds into 3 and plus 2 dots, that will be around approximately 4.8 seconds. So
एक आइडेंटिफिकेशन भेजने के लिए जो 3 डिजिट्स की है एटलीस्ट 5 सेकेंड्स लगेगा. So here it is calculating your time next. The duration आपने डॉट का टाइम ड्यूरेशन बता दिया, डैश का टाइम ड्यूरेशन बता दिया. ड्यूरेशन बिटवीन अ डॉट एंड अ डैश शैल बी इक्वल टू 1 डॉट प्लस और माइनस 1%. The time duration between letters or numerals shall not be less than 3 dots. The total period of transmission of an identification code group shall not exceed 10 seconds. अगर एक आइडेंटिफिकेशन कोड हमें ज्यादा बड़े से बड़ा भी भेजना होगा देन इट कम्स अराउंड 5 seconds. So here as per ICAO it is telling that total period of transmission of an identification code group, हो सकता है ये 4 डिजिट के लिए भी कैलकुलेट कर रहा है, that shall not exceed 10 seconds. रीजनेबल लग रहा है ना सर टाइम? ठीक है सर, सर समझ में आ रहा है? सर आगे बढ़ें? जी सर, बढ़िए आगे. Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है. Characteristics of the ident signal with associated facility. The characteristics of the associated signal shall be as follows. When it is associated with a VHF MLS facility, which is ILS, the identification shall be transmitted in the form of dots and dashes as described above and shall be synchronized with the VHF facility identification code. वो किसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए? जो भी आपका ILS फैसिलिटी है या जो भी आपका VOR फैसिलिटी है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए. Each 40 seconds interval shall be divided into 4 or more equal parts with the transponder identification transmitted during one period only and the associated VHF MLS facility identification where these are provided transmitted during the remaining periods. So every 40 second interval में आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे उसको इक्वल पार्ट्स में और तब जाके आप एसोसिएटेड फैसिलिटी के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से दैट आइडेंटिफिकेशन इज टू बी ट्रांसमिटेड. Implement कैसे हो रहा है? The independent identification code shall be employed wherever a transponder is not specifically associated with a VOR or ILS facility. तो जहां पे वो associated नहीं है वहां हम independent identification code उसे दे सकते हैं. And wherever a transponder is specifically associated with VOR or ILS, it should be provided by the associated code. अभी कोई बता सकता है कि सपोज हमारा VOR में या इसमें वॉइस का भी प्रोविजन है ना सर? अग्रीड और नॉट? Agreed, sir, agreed. एनीवन सर? एग्रीड. सो जिस समय हमारा वॉइस ट्रांसमिशन हो रहा होगा तो आइडेंट का क्या होना चाहिए उस समय? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्या लगता है? एनीवन सर? गलत सलत कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. हेलो. वॉइस में दिक्कत आ जाएगी और उसे सुनाई नहीं देगा प्रॉपरली. बट दैट इक्विपमेंट इज नॉट मेड फॉर दैट पर्पस. सो हियर इट इज व्हेन वॉइस कम्युनिकेशंस. सर म्यूट करेंगे सर? थैंक यू. So here it is. When voice communications are being radiated on an associated VHF navigational facility, an associated signal from the transponder
shall not be suppressed, क्योंकि जो हमारा पर्पस है डीएमई का, वो जो हमारा आइडेंटिफिकेशन भेज रहा है जो भी एसोसिएटेड फैसिलिटी से, वो हमारा VHF इज नॉट द मेन फंक्शन। हम नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे, तो अगर हम वॉइस कम्युनिकेशन भी अगर उसमें यूज कर रहे हैं तो वॉइस कम्युनिकेशन इज नॉट द प्रायोरिटी, और navigation signal is our priority and that shall not be suppressed. ओके सर, सर समझ में आया? आगे जाएं। चलिए ठीक है। टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपॉन्डर एंड एसोसिएटेड मॉनिटर्स। अभी इससे पहले तक जो स्लाइड्स पढ़ रहे थे उसमें हम एज अ इक्विपमेंट, एज अ होल सिस्टम, एज अ होल एक्यूरेसी, एज अ होल दैट वी वर कंसीडरिंग, that is of interrogator part, transponder part, and reflections and errors, all were implemented all together. Now we are discussing about the technical characteristics of transponder only, whatever is available with us on ground. So that also has two parts. ट्रांसपॉन्डर में भी दो पार्ट हैं, एक ट्रांसमीटर पार्ट है, एक रिसीवर पार्ट है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। सो द ट्रांसमीटर पार्ट ऑफ द ट्रांसपॉन्डर, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए? द ट्रांसपॉन्डर शैल ट्रांसमिट ऑन अ रिप्लाई फ्रीक्वेंसी एप्रोप्रिएट टू द असाइंड डीएमई चैनल्स, जो आपको हमने दिखाई थी टेबल, उसके हिसाब से उसके 960 से लेके 1215 मेगाहर्ट्ज के बीच में काम करता है। ठीक है। क्रिटिकली यूज्ड इज 962 से 1213 मेगाहर्ट्ज। दिस frequency is selected from the bands for the initial 63 channels, 962 से 1024 megahertz for X channel and 1088 to 1150 for Y channels. The remaining for the next 63 channels, 1151 to 1213 for X channel and 1025 megahertz 1087 megahertz के बीच में for Y channel. इतना ध्यान रखने की कोई समझ लेंगे कॉन्सेप्ट तो इजी है। अदरवाइज आपके पास वो पूरा चार्ट है प्रिपेयर्ड, एक टेबल ए दी हुई है एनएक्स 10 में बड़ी सी, अप टू 126x एंड 126y तक। हर चैनल में आप कोई भी चैनल सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या फ्रीक्वेंसी आपका इंटेरोगेटर का रहेगा, क्या आपका ट्रांसपॉन्डर का रहेगा, क्या उसकी पल्स स्पेसिंग रहेगी, और कौन सा एसोसिएटेड जो भी फैसिलिटी है उसकी भी क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, दैट इज मेंशन्ड देयर। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन विच वी आर यूजिंग, that should not vary more than plus minus 0.02 0.002%। जैसा कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1018 एंड 1081 है, so that should not be more than plus minus 0.002% of those assigned frequencies. पल्स शेप कैसी होनी चाहिए? whenever an interrogator is providing a pulse pair, uh, what shall be the pulse shape which our transponder can validate? A waveform similar to Gaussian in shape in time domain is used for the DME pulses. Because of its shape, there is less sideband energy. ये बहुत अभी अगर किसी का ओपन एग्जाम में डीएमई वगैरह किसी ने दिया हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई दिस गॉसियन पल्स इज बीइंग यूज्ड, तो उसका ये एक रीजन है कि जो उसका मैक्सिमम एनर्जी है वो बीच में
energy confined hai, and it has very less sideband energies. So because of its shape, there is less sideband energy radiated, therefore less interference with other DMEs operating on adjacent channels. The true Gaussian waveform is a symmetrical bell-shaped statistical curve by squaring the amplitude of each point in time in a sine wave. तो Gaussian waveform बनाना बहुत easy है, sine wave की तरह है, so it is being used. So here इसके बारे में सभी को पता होगा, राइज टाइम क्या है, फॉल टाइम क्या है, हाफ विथ पॉइंट क्या है, 95% एम्पलीट्यूड पॉइंट क्या है. अ, ये एक जनरल एक पल शेप का डायग्राम है. Pulse shape and spectrum. So, ICAO has provided some specifications regarding how this pulse shape should be. उसका rise time क्या होना चाहिए? That should not exceed 3 microseconds. Pulse duration कितनी होनी चाहिए? That is the width which is being measured at the half amplitude, half voltage points on the leading edge and the trailing edge of the pulse. That shall be 3.5 microseconds plus minus 0.5 microseconds. बोरिंग है, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकेशंस हैं, प्लीज जान लीजिए इन्हें. Pulse decay time shall normally it is 2.5 microseconds plus minus, but shall not exceed 3.5 microseconds. तो जो हमारा pulse decay time है या fall time है, that shall nominally be 2.5 microseconds, but it should not exceed 3.5 microseconds. इसी तरह अगर हम देखें कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है स्पेक्ट्रम, अगर उस फ्रीक्वेंसी fc पे प्लस माइनस 0.8 मेगाहर्ट्ज दूर जाते हैं, अगर हम देखें 0.5 मेगाहर्ट्ज के बीच में, then that effective radiated power should be less than 200 milliwatt, and if it is beyond that प्लस माइनस 0.8 मेगाहर्ट्ज में जाते हैं with 2 megahertz difference, then it should be less than 2 milliwatt. तो जो आपकी साइड बैंड EIRP इफेक्टिव रेडिएटेड पावर जो है, वो जो आपके साइड बैंड्स की वजह से है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है. मींस दैट इज लेस देन 2 milliwatt. Now pulse spacing. The pulse spacings shall be measured between the half voltage points on the leading edge of the pulses. तो जो पल्स पेयर है, जो दो पल्स पेयर हैं, तो एक लीडिंग एज, दोनों पल्सेस के बीच का लीडिंग एज का जो हाफ वोल्टेज पॉइंट है, उन दोनों के बीच का ड्यूरेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पल्स स्पेसिंग. The spacing of the constituent pulses of transmitted pulse pairs shall be as below. चैनल X है तो 12 माइक्रोसेकेंड्स, और उसका टॉलरेंस जो है दैट इज प्लस माइनस 0.25 माइक्रोसेकेंड्स. रिकमेंडेड ये है कि वो जो पल्स स्पेसिंग में टॉलरेंस जो है, दैट शुड बी प्लस माइनस 0.1 माइक्रोसेकेंड, but the specification is standard is plus minus 0.25 microseconds. Now peak power output. Peak power output, this is the equivalent जो भी EIRP है हमारा, equivalent isotropically radiated power shall not be less than that required to ensure a peak under all operational weather conditions at any point of time within the coverage limits of the facility. अगर
हमारा DME सपोज उस कवरेज तक प्रोवाइड कर रहा है पावर, तो वहां हमारा पावर डेंसिटी जो है इतना मिनिमम होना चाहिए, सो दैट योर इंटेरोगेटर कैन पिक दैट सिग्नल. -89 dBW per meter square should be the peak pulse power density under all operating conditions. Although the standard stated above implies improved interrogator receiver sensitivity, it is intended that the power density of -83 dBW per meter square be available at the maximum specified service range and level. ये एक रिकमेंडेशन है जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई आप अगर थोड़ा और पावर डेंसिटी का सिग्नल दे सकें टू द मैक्सिमम स्पेसिफाइड सर्विस रेंज, it is an this will imply a improved interrogator receiver sensitivity. Okay. The peak power of the constituent pulses of any pair of pulses shall not differ by more than 1 dB. तो जो भी हमारी पल्स पेयर जा रही है, तो जो पहली पल्स है और जो सेकेंड पल्स जो भी उसका पल्स पेयर है नेक्स्ट, उन दोनों का पीक पावर का जो डिफरेंस है दैट शुड नॉट बी मोर देन 1 dB. सर ये हम लोग इस मेंटेनेंस शेड्यूल में देखते हैं सर. एनीबडी एनीवन एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस ऑफ DVR DME? सर ये जो पल्स पेयर जो हम DME में देखते हैं, ये किस मेंटेनेंस शेड्यूल में आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं सर? Anyone please? मंथली में करते सर हैं सर. यस सर, है ना. तो ये हम मंथली में करते हैं. उस समय दोनों हम पीक जो पल्स पेयर हम चेक करते हैं, उनके बीच का स्पेसिंग चेक करते हैं. पल्स पेयर्स के बीच में जो हमारा इंटेरोगेशन आया और जो हमारा रिप्लाई जा रहा है, दोनों के बीच में पल्स स्पेसिंग चेक करते हैं. फिर उसके बाद हम एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं और उन दोनों के एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस भी चेक करते हैं कि that should not be more than 1 dB, and these are being done in monthly maintenance schedules. Very nice sir. Recommendation है, the reply capability of the transmitter should be such that the transponder बताएंगे, transponder should be capable of the continuous operation at a transmission rate of see 2700 plus minus 90 pulse pairs per second. अगर 2700 में प्लस 90 करें तो कितना आ रहा है सर? 2790 pulse pairs and minus is the PRF if 100 aircrafts are to be served. This is recommendation. The minimum transmission rate shall be as close as practicable to 700 pulse pairs per second. जो हम मिनिमम हमारा ट्रांसमिशन रेट है, जब हमारा कोई इंटरोगेशन भी नहीं है, जिस समय हमें केवल स्क्विटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एज क्लोज एज प्रैक्टिकेबल टू 700 पल्स पेयर्स पर सेकेंड हम ट्रांसमिशन रेट रखते हैं फॉर आवर ट्रांसपॉन्डर्स. इसी तरीके से नाउ वी spurious radiations during intervals between transmission of the individual pulses, the spurious power received and measured in a receiver having the same characteristic as a transponder receiver but tuned to any DME interrogation of reply frequency shall be more than 80 dB below the peak pulse power received
and measured in the same receiver tuned to the reply frequency in use during the transmission of the required pulses. स्पूरियस रेडिएशन में ये बता रहा है कि जब भी हम ट्रांसमिशन ऑफ इंडिविजुअल पल्सेस के बीच का इंटरवल के बीच में ड्यूरिंग दैट इंटरवल जो भी स्पूरियस पावर रिसीव हो रही है किसी और दूसरे ट्रांसपॉन्डर से जो कि उससे 80 डीबी सिग्नल उसका ज्यादा भी हो, तब भी that should be more than 80 dB below the peak pulse power received and measured in the same receiver tuned to the reply frequency. So this is the spurious radiation. The specification is it should not be जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसपॉन्डर रिसीवर की, when tuned to any DME interrogation or reply frequency shall be more than 80 dB below the peak pulse power received. Or out of band spurious radiation at all frequencies from 10 to 1800 megahertz but exceeding the band of frequencies from 960 जो भी हमारा DME का बैंड है, the spurious output of the DME transponder transmitter, it shall not exceed minus 40 dBm in any 1 kilohertz of the receiver bandwidth. तो जो भी हमारा स्पूरियस रेडिएशन इससे जो जा रहा है that should not exceed minus 40 dBm. Now we move to ट्रांसपॉन्डर का ही रिसीवर पोर्शन. हमारा जो ग्राउंड बेस्ड ट्रांसपॉन्डर है उसका रिसीवर में क्या है उसके बारे में हम एकाउ के स्टैंडर्ड्स पढ़ लेते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन जो भी हमारा डीएमई ऑपरेटिंग चैनल है वो आप टेबल में देख सकते हैं 962 1215. फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी कितना होना चाहिए? प्लस माइनस 0.002% फ्रॉम द असाइंड फ्रीक्वेंसी. अब इसमें ट्रांसपॉन्डर सेंसिटिविटी जो हमारा रिसीव कर रहा है सिग्नल, इंटेरोगेशन जो हमारे पास रिसीव होके आई है वो कितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, कितने लेवल तक का सिग्नल को रिसीव कर लेना चाहिए, दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट. In the absence of all interrogation pulse pairs, with the exception of those necessary to perform the sensitivity measurement, जब भी the interrogation pulse pairs with the correct spacing and nominal frequency, it should trigger the transponder if the peak power density at the transponder antenna is at least minus 103 dBW per meter square और माइनस 93 dBW पर मीटर स्क्वायर. ये दो कंडीशंस हैं कि अगर इतने लेवल तक का सिग्नल अगर हमारे ट्रांसपॉन्डर एंटीना को प्राप्त होता है तो हमारा ट्रांसपॉन्डर दैट शुड बी ट्रिगर्ड. कोई भी इंटेरोगेशन पल्स पेयर्स जो करेक्ट स्पेसिंग की है, करेक्ट नॉमिनल फ्रीक्वेंसी की है और इतने लेवल की है तो हमारा ट्रांसपॉन्डर ट्रिगर होना चाहिए और माइनस 103 dBW पर मीटर स्क्वायर पीक पावर डेंसिटी का सिग्नल को एक्सेप्ट करना चाहिए विथ कवरेज रेंज ग्रेटर देन 30 नॉटिकल माइल्स. when it is providing if suppose VOR के केस में 200 नॉटिकल माइल्स तक दे रहे हैं then एटलीस्ट माइनस 103 dBW पर मीटर स्क्वायर का कोई सिग्नल ट्रांसपॉन्डर पे मिलता है then it should be triggered. And for less than 30 nautical miles almost we can say ILS के लिए minus 93 dBW per meter square for DME with coverage range not greater than 30 nautical miles. इतने लेवल का अगर सिग्नल ट्रांसपॉन्डर एंटीना पे मिलता है then our that transponder should actuate and accept those interrogations.
The minimum power densities specified above shall cause the transponder to reply with an efficiency of at least 70% for DME. Sensitivity at 70% efficiency, अगर आप देख रहे हैं तो -103 dBW per meter square के केस में अगर इसको हम dBW में चेंज करेंगे, because this is power density, we know that this can be converted to dBW in terms of power with the formula 10 log lambda square upon 4 pi. So this will come out to be -103 plus 10 log lambda square upon 4 pi, that is -23. So it comes out -126 dBW. In dBm it will be around 96 -96 dBm at antenna. So that can be easily 1 upon 10 to the power of 9.6 milliwatt. इतने लेवल तक का भी सिग्नल अगर आपको एंटीना पे मिला है, then our DME transponder should be actuated and it should be triggered to perform its task to generate its reply to be sent. So ये हमारा सेंसिटिविटी का बात हो गया ट्रांसपोंडर, जो हमारा ट्रांसपोंडर है उसके रिसीवर के बारे में। अब इसका डायनेमिक रेंज, रिसीवर की डायनेमिक रेंज जो हमारा ट्रांसपोंडर है ग्राउंड पे, उसके रिसीवर की डायनेमिक रेंज क्या होनी चाहिए? द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसपोंडर शैल बी मेंटेन्ड when the power density of the interrogation signal at the transponder antenna has any value between -103 dBW per meter square up to the maximum of -22 dBW per meter square when installed with ILS, and it can be between -103 dBW per meter square to -35 dBW per meter square when installed with other applications. We can say VOR2. The transponder sensitivity level shall not vary by more than 1 dB for transponder loadings between 0 to 90% of its maximum transmission rate. जो भी हमारा सेंसिटिविटी है, ट्रांसपोंडर की जो सेंसिटिविटी अभी हमने पढ़ी है, जो भी उसका लेवल जाना है, -103 dBW per meter square is the minimum for when it is providing the coverage of more than 30 nautical miles, -93 dBW per meter square when it is providing the coverage of less than 30 nautical miles. तो उस सेंसिटिविटी में ±1 dB का ही अंतर हो सकता है अगर ट्रांसमिशन रेट हमारा 0 से 90% अगर वेरी हो रहा है तो। When the spacing of an interrogator pulse pair varies from the nominal value by up to ±1 microseconds, the receiver sensitivity shall not be reduced by more than 1 dB. जो हमारी इंटेरोगेटर पल्स पेयर जो आ रही है, अगर उसकी स्पेसिंग नॉर्मली nominal value, if say for X channel it is 12 microseconds, अगर उसकी स्पेसिंग में ±1 microseconds का डिफरेंस आ भी रहा है, then the receiver sensitivity of our transponder shall not be reduced by more than 1 dB. Sensitivity reduction. तो अभी when the transponder loading exceeds 90% of the maximum transmission rate, the receiver sensitivity should be automatically reduced, क्योंकि अभी बहुत सारे एयरक्राफ्ट नजदीक में आ गए, तो उसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट 90% जैसे ही एक्सीड हुआ, वो अपने रिसीवर की सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर लेगा। मतलब अब वो -103 dBW पर मीटर स्क्वायर वाला जो सिग्नल आएगा, उसको ज्यादा कुछ नहीं अहमियत देगा। दैट शुड बी, अब जो पास एयरक्राफ्ट जो है, पीक जो उसका ट्रैफिक है, उसके पास जो स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स जो आ रहे होंगे, पहले उनको ही रिप्लाई जनरेट करेगा एंड it will correspond replies to those nearby aircrafts only. So
जब हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट एक्सीड हो जाता है 90% से, देन द रिसीवर, जो ट्रांसपॉन्डर का रिसीवर सेंसिटिविटी है, उसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना है इन ऑर्डर टू लिमिट द ट्रांसपॉन्डर रिप्लाईज, सो एज टू एंश्योर that the maximum permissible transmission rate is not exceeded. The average range of sensitivity reduction should be at least 50 dB. तो कम से कम जो है हमारा 50 dB तक आपका रिसीवर, ट्रांसपॉन्डर का रिसीवर सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ट्रांसपॉन्डर का जो रिसीवर है उसका नॉइज लेवल व्हेन द receiver is interrogated at the power densities specified above, if जो भी हमारी पावर डेंसिटी मिनिमम जो है वो -103 और -93 dBW पर मीटर स्क्वायर जो है, to produce a transmission rate equal to 90% of the maximum, the noise generated pulse pair shall not exceed 5% of the maximum transmission rate. तो जो भी नॉइज पल्स पेयर जनरेट हो रही है वो 5% से ज्यादा नहीं जनरेट हो। इसी तरह से बैंडविड्थ क्या है, हमारे रिसीवर ट्रांसपॉन्डर जो ग्राउंड पर है उसके रिसीवर की बैंडविड्थ क्या है, that is the minimum permissible bandwidth of the receiver shall be such that the transponder sensitivity level shall not deteriorate by more than 3 dB when the total receiver drift is added to an incoming interrogation frequency drift of plus minus 100 kilohertz. अगर हमारे पास जो इंटेरोगेशन फ्रीक्वेंसी आई है 1018 है, interrogation frequency for our channel 57x, it is 1081 megahertz. If it is drifted to plus minus 100 kilohertz, then our transponder sensitivity level shall not deteriorate by more than 3 dB. आधे से ज्यादा उसे deteriorate, उसकी transponder sensitivity कम नहीं होनी चाहिए। सिग्नल्स ग्रेटर देन 900 किलोहर्ट्ज अगर है तो उसको तो पूरा रिजेक्ट करना है। सिग्नल्स ग्रेटर देन 900 किलोहर्ट्ज रिमूव्ड फ्रॉम द डिजायर्ड चैनल नॉमिनल फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग पावर डेंसिटीज अप टू द वैल्यूज स्पेसिफाइड, वो अपने अच्छी खासी पावर में भी आ रही हो, देन ऑल्सो द डीएमई शैल नॉट बी ट्रिगर्ड, the for those specified values DME shall not trigger the transponder. कोई रिप्लाई जनरेट करने की जरूरत नहीं है ऐसे सिग्नल पर। Signals arriving at the intermediate frequency shall be suppressed at least 80 dB. अगर इस टाइप का सिग्नल अगर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे अराइव हो रहा है तो उसको भी 1/10 to the power of 8 times सप्रेस कर देना है। All other spurious response or signals and image frequencies shall be suppressed at least 75 dB. ऐसे जो सिग्नल जो 900 किलोहर्ट्ज से अपार्ट आ रहे हैं, स्पूरियस सिग्नल्स भी हैं, इमेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी फॉर्म हो रही है, तो वो भी सप्रेस हो जाना चाहिए बाय एटलीस्ट 75 dB. So this is what about the receiver's bandwidth. Now is the recovery time. Within तो जब वो रिजेक्ट करेगा उसके बाद क्या, within 8 microseconds of the reception of the signal between 0 dB to 60 dB above minimum sensitivity level, the minimum sensitivity level of the transponder to the desired signal shall be within 3 dB of the value obtained in the absence of the signals. This requirement shall be met with echo suppression circuits if any rendered inoperative. मीन्स जैसे आपका फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट के साथ सिग्नल आया था, ऐसे ही आपका जो पल्स ड्रिफ्ट के साथ सिग्नल अगर आता है, अगर आपका शॉर्ट इको सप्रेशन जो आपको कल बताया गया था, अगर पास में कोई टेरेन ऐसा है जिसकी वजह से शॉर्ट इको आ रहा है, means that drift it is, if it is there, once the main signal arrives it should desensitize itself to a लोअर लेवल 3 dB डाउन वो
it should suppress those echoes. The 8 microseconds are to be measured between the half voltage points on the leading edge of the two signals, both of which conform in the shape. हम बता रहे हैं कि आपका वोल्टेज कहां पे मेजर करना है, that is between the half voltage points of the leading edge of the two signals. CW and echo suppression. Recommendation is continuous wave and echo suppression should be adequate for the sites at which the transponders will be used. Echoes means undesired signal caused by multi-path transmission, reflections, etc. जो ट्रांसपॉन्डर हमारा है ग्राउंड पे, उस रिसीवर का डिकोडिंग कैसे करेगा ये? द ट्रांसपॉन्डर शैल इंक्लूड अ डिकोडिंग सर्किट. एक डिकोडिंग सर्किट होगा such that the transponder can be triggered only by pair of received pulses having pulse duration and pulse spacing appropriate to interrogator signals. अगर हमारा इंटेरोगेटर सिग्नल प्रॉपर आया है, विथ प्रॉपर पल्स स्पेसिंग आया है, विथ प्रॉपर नॉमिनल फ्रीक्वेंसी के साथ आया है, बिना ड्रिफ्ट किए हुए आया है, देन आवर ट्रांसपॉन्डर शैल include a decoding circuit such that the transponder can be triggered. तो हम बोल रहे हैं बार बार ट्रांसपॉन्डर ट्रिगर होना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए, तो ट्रिगर क्या मतलब? वो एक डिकोडिंग सर्किट एक्चुएट होना चाहिए जो कि इनकमिंग इंटेरोगेटर सिग्नल को उसके बाद प्रोसेस करेगा, उसे डिकोड सर्किट फॉर्म करेगा. The decoding circuit performance shall not be affected by signals arriving before, between, or after the constituent pulses of the pair of the correct spacing. तो उसे कोई performance shall not be affected कि उस समय और भी कोई सिग्नल आ रहा है तो उससे वो unaffected रहेगा. Once that valid interrogation comes, it will start decoding and it will that transponder will be triggered and it will perform its reply generation. Decoder rejection कब करेगा? An interrogation pulse pair with a spacing of plus minus 2 microseconds. आनी थी 12 microseconds pulse pair spacing की, आ गई 14 microseconds, 15 microseconds spacing की or more from the nominal value and with any signal level up to the value specified. उतने level का भी आ गया. Shall be those signals shall be rejected such that the transmission rate does not exceed the value obtained when interrogations are absent. तो वो बता रहा है कि डिकोडर जो भी हमारा डिकोडिंग सर्किट एक्चुएट हुआ है, वो जो वैलिड इंटेरोगेशन को चेक कर रहा है, अगर इंटेरोगेशन पल्स पेयर ऐसी आ गई जिसमें स्पेसिंग प्लस माइनस 2 माइक्रोसेकंड से बाहर है, तो दैट डिकोडर इट शुड रिजेक्ट दोज interrogation pulses and should not process the output. Time delay कितना होना चाहिए? When the DME is associated only with the VHF facility, the time delay shall be the interval from the half voltage point on the leading edge on the first constituent pulse and of the interrogation pair and the half voltage point on the leading edge of the reply transmission. तो आपने देखा होगा कि दो पल्सेस हमारा इंटेरोगेशन में आ गई, फिर उसके बाद आफ्टर अ टाइम डिले ऑफ 50 माइक्रोसेकेंड्स हमारा रिप्लाई जनरेट होता है. तो जो फर्स्ट पल्स पेयर की लीडिंग एज है और जो इंटेरोगेशन पल्स की लीडिंग एज है, उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, दैट इज द टाइम डिले. This delay shall be 50 microseconds when it is desired that aircraft interrogators are to indicate distance from the transponder reply. Accuracy कितनी होनी चाहिए? The transponder shall not contribute more than plus minus 1 microseconds to the overall system error, जो कि हम सिस्टम में भी पढ़े थे. तो जो हमारा ट्रांसपॉन्डर है वो 1 microseconds का 50 microseconds plus minus 1. So this is comes around to be 150
meters. That should be the overall system error which a transponder which is at a ground that can contribute as an error. ठीक है, रिकमेंडेशंस में भी और काफी कुछ दिया हुआ है, मैं जस्ट रीड कर देता हूं. The contribution to the total system error due to the combination of the transponder errors, transponder location coordinate errors, propagation effects, random pulse pair effects should be not greater than plus minus 340 जो पहले लिखा हुआ था, plus 1.25% of the distance measured. और ये काफी आप जब डिटेल में पढ़ेंगे then it will be easy for you. तो अभी आपको समझ लेना है कि जो ट्रांसपोंडर का जो एक्यूरेसी है वो हमारा दैट शुड नॉट डेविएट प्लस माइनस 1 माइक्रोसेकेंड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 150 मीटर्स. रिसीवर का एफिशिएंसी कैसा होना चाहिए? द ट्रांसपोंडर रिप्लाई एफिशिएंसी शैल बी एटलीस्ट 70% ऑफ फॉर DMEN at all values of transponder loading up to the loading and at the minimum sensitivity level specified. जो भी हमारा पीक ट्रैफिक है उसको कैडर करना चाहिए एंड एट द मिनिमम सेंसिटिविटी लेवल स्पेसिफाइड कि इतने लेवल तक के सिग्नल्स भी वो प्रोसेस कर ले. When considering the transponder reply efficiency values, account is to be taken of the DME dead time and of the loading introduced by the monitoring function. So अगर हमारे पास ज्यादा पीक ट्रैफिक आ गया, 100 एयरक्राफ्ट से ज्यादा आ गया, देन हमारा ट्रांसपोंडर का सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना चाहिए. अगर हमारा कोई सिग्नल लॉन्ग इको इफ सपोज एन रिसीव होता है, सो इट शुड बी वो एफिशिएंसी डिपेंड करता है हमारे ट्रांसपोंडर पे कि वो डेड टाइम में फॉल करे. सो व्हेन अ वैलिड इंटरोगेशन कम्स देन DME स्टार्ट्स इट्स डेड टाइम of around 60 microseconds, during which it processes its, decodes it, generates a reply and transmits it. So उस टाइम पे उसका अगर कोई इको भी आता है then it falls on the dead time and it will not be processed. Transponder dead time. The transponder shall be rendered